IPsec and after the IP security, I think this unit is over, but IP security is good and it is a big topic for discussing. Okay, so these are the three topics for the third unit. Fine. So directly go to the PPT. Okay, SAT basically is called the secure electronic transaction. This is the technique that is used for the credit card transaction. Okay, so this SAT itself is not any kind of the transaction, we can say the transaction condition or the transaction facility. No, SAT is the kind of the architecture or the method that provides the security in transaction, in credit card transaction phase. So as you can see here that it provides the confidentiality kind of the requirements. If we talk about the requirements, so one is the it provide confidentiality of payment and ordering information. Okay, so uh, now I'm going back to the board. Okay, so I'm sharing this. Visible है देखो board, digital board. Yes, sir. Okay, so when we talk about the requirements, so very first, just wait. So very first requirement is to provide confidentiality of payment and ordering information. अच्छा एक काम करते हैं हम उस ग्लास बोर्ड का यूज करते हैं इस पर तो बहुत लेंदी रहेगा. Okay, so very first requirement, it is basically related to provide confidentiality of payment and ordering information. So one is ordering information. Okay, so basic meaning of ordering information, security confidentiality is okay, but what about the ordering information means? In whatever the order, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं like the priority basis, whatever the transaction has been done in first, then that transaction will be dealt first, something like this. And after this, ensure the integrity of all transmitted data. This is the second one. So whenever we say security aspects in any kind of the network security model, so these are the three things always there. One is confidentiality. Okay, the another is the integrity, and the another is we can say authentication. So these are three aspects, basic aspects. इसके अलावा फिर आप जितना मर्जी सिक्योरिटी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं. So integrity of all transmitted data. So अच्छा इस respect में in respect of the set, what is the meaning of integrity? क्या मतलब है इसका? Basically there will be no changes in transmitted data, ठीक है, or the transaction in between of the communication. Okay, so this is the basic meaning of integrity here. And then authentication. So we can say it provides the authentication that a merchant can accept credit card transactions through its relationship with a financial institution. So इसका जो basic meaning है, इसको अगर मैं if I'll say if I'll explain the complete line in one word,
then we can say the third party involvement. Third party involvement. Okay, so in third party involvement, what happens if there is one sender, one receiver, and here somewhere here the third party is there. Okay, now sender and receiver do not make the communication directly, but through the third party. Okay, something like this. और ये बाई डायरेक्शनल होता है दोनों साइड से, सेंडर एंड रिसीवर साइड से. आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. व्हेन वी यूज इंटरनेट, ओके, आप मॉडेम यूज करते हैं, वाईफाई मॉडेम सपोज. सो बीएसएनएल का आपने मॉडेम यूज किया हुआ है. सो देयर विल बी थर्ड पार्टी इन बिटवीन यू एंड द सर्विस प्रोवाइडर. Okay, so sometimes you may consider service provider in between in the third party also, because वो centralized thing को देखता है और service provide करता है. But receiver, आपका main receiver side, receiving side क्या होगा, means not receiver but the final stage, final company is the BSNL, और आप किसी आइडिया या जिस किसी का भी लेते हैं तो something like this. तो इस तरीके के थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में वी हैव टू बी मोर केयरफुल. देन द फोर्थ, जैसा अभी मैंने बोला था आपको, ये तीन बेसिक हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन. इसके बाद आप जिस तरीके से आपका सिस्टम बिहेव करता है या सिस्टम आप डिजाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वी कैन इंक्लूड और वी कैन डिफाइन अदर सिक्योरिटी मेजर्स. सो उसी के सीरीज में हम ऐसे कह सकते हैं दैट इट एंश्योर्स द यूज ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम डिजाइन टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट ऑल लेजिटिमेट पार्टीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शन. नाउ द थिंग इज, इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं. सपोज यू आर यूजिंग द क्रेडिट कार्ड ऑफ HDFC. ओके, नाउ आपने जो पेट्रोल फिलिंग स्टेशन से, सपोज आपके 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में, जिस किसी भी में भी आपने पेट्रोल लिया, एंड देन यू विल पे थ्रू द HDFC कार्ड. ओके, नाउ देयर आर सो मेनी इंटरमीडिएट स्टेजेस एंड वी कैन से सो मेनी इंटरमीडिएटर्स. पहले तो जो ट्रांजैक्शन डिवाइस उस पेट्रोल पंप पर अवेलेबल होगा, दैट डिवाइस इट माइट बी फ्रॉम HDFC और इट माइट बी फ्रॉम अदर्स आल्सो. तो एक तो वहीं पर चेंज हो सकता है जो भी मशीन है, ठीक है. देन फिर वो मशीन जिस बैंक से कनेक्ट होगा, देन वो बैंक आपका बीच में आएगा. देन इंटरनेट, anyone who is providing the internet, or we can say who is handling the internet services, that service provider will be there, or Wi-Fi connection, whatever the connection is there. And at the last, your bank transaction, HDFC, means your bank, HDFC bank. So there are so many open system, we can say open system entities are there, and we have to make this credit card transaction more secure in open system case. That is why SAT is required, means SAT is having set of rules by which this transaction will make very secure. And definitely for doing all the things whatever I have told you, so there must be some kind of the fixed protocol. So create a protocol that neither depends on transport security mechanism nor prevents their use. Now, अब इसका क्या meaning? What it means? Because अभी है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सर्विस भी हमने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया. देखो, इसका बेसिक मीनिंग ये है दैट सेट में जो रूल्स आप प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं, दैट प्रोटोकॉल मस्ट बी जेनरिक. Because in what sense you are using credit card, in what sense we are
making the transaction related to credit card. So we do not know what kind of the transaction system we are following. ठीक है, तो फिर ये generic ही होना चाहिए सारे rules. So it does not depend on the transport security. तो transport security mechanism और उसकी जो services थी उसको affect नहीं करना चाहिए. Whatever the services we have discussed for TLS, so ये generalized protocol set of rules होना चाहिए. Then facilitate and encourage interoperability among software and network providers. फिर वही आ गया, what kind of the ये software and network provider से independent होना चाहिए. Means fix नहीं है कि अगर आपके पास HDFC का ही क्रेडिट कार्ड है तभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या SBI का क्रेडिट कार्ड है तभी आप कर सकते हैं. नो, या आप you are using the Wi-Fi or internet connection from particular service provider, only then you means your transaction will work. No, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये independent ही होना चाहिए. Okay, so these are the basic requirements. Now we can move to the key features. Key features of the set. Other than these 4 key features, we are having the, we can say the other services also, but these are the main, जैसा मैंने आपको कहा भी था, these are the main services. देखो, one is the confidentiality, second is the integrity, this third is authentication. Now authentication for both the cases, credit card holder and merchant authentication. Basically authentication, when we say that SAT enables card holders to verify that a merchant has a relationship with a financial institution, allowing it to accept payment cards. तो सबसे पहले तो आप whatever the card you are having, so when this card will be genuine, okay, only then that card must be work. Okay, and once it is checked that your card is genuine, then merchant device will be supported or merchant system will be supported to the customer or the card holder. And another thing is, for doing this, SAT uses X.509 version 3 for providing the authentication. X.509 version 3 digital signature technique is used for providing the digital signature कह सकते हैं, digital method कह सकते हैं for SSL/TLS. ये version है इसके secure socket layers के included है, and that certification, that service will support to SAT also. And RSA signature thing is also used here for providing the authentication. RSA signature. So these are the key features of the SAT. And as I told you, मैं फिर से बोल रहा हूँ, SAT is not the transaction system itself. No, SAT provides the mechanism for the credit card transaction systems for making that system secure, very secure. So this is kind of the SAT. Okay, so now again I am erasing all the things. Okay, now these are the basic SAT components, or we can say the SAT participants. Okay, so again I am using this digital board. देखो ये ग्लास बोर्ड अभी मैंने वापस से हेलो लिखा, ये विजिबल है ना ग्लास बोर्ड? Yes, sir. ओके फाइन फाइन. अच्छा, बीच में किसी को कुछ डाउट आए तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज तो ये सिंपल थ्योरी है, बट
we have to understand this theory in reference of the network security module. Okay, so once you will try to understand, then there are lots of things. Otherwise वो आपको बहुत simple theory ही लगेगा, but ऐसा है नहीं. Once you will start questioning, then you will get the essence of these kind of the systems, these kind of the methodologies for providing the better security in any kind of the network security based subject or system. Okay, so very first is we will start with the card holder first. So card holder, we can say that in the electronic environment, consumers and the corporate purchaser interact with merchants from personal computer over the internet. Okay, so basically हम ऐसे consider कर सकते हैं that suppose this person is ordering something from Amazon, so via credit card. Okay, then the merchant, second is the merchant. Obviously the connection will be established via internet only. Once you will have the internet connection, only then we can search that what are the products, or we can say the what the products are available for purchasing on Amazon site or other site. I'm simply naming, taking the name Tata Click and पता नहीं बहुत सारी. ठीक है? So this is the merchant. Okay, now merchant. A merchant is a person or organization that has goods or services to sell to the card holder. Typically, these goods and services are offered via website or by electronic mail. अच्छा, यहाँ पर एक केस लेते हैं. यहाँ we can consider a case of Paytm. आप सभी ने Paytm यूज किया हुआ है, ठीक है? So now tell me, you will put Paytm where? At the merchant side or the third party or what? Paytm को आप किस where you will put? Paytm is the merchant or the third party or the service provider? Merchant, sir. Huh? Merchant. Merchant. Okay. Sir, I guess third party. Okay. Third party. So वो दोनों चीज प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, मतलब. अच्छा, ठीक है. If I'll say that Paytm is a customer also? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. So Paytm customer कैसे हुआ? नहीं, मैंने तो पूछा. देखते हैं. Let's see, check. We check. अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं. Okay. Merchant क्यों? Why it is merchant? ये तो आसान है. सर वो लाइक क्रेडिट कार्ड डेबिट का प्रोवाइड करवा रहा है एंड मतलब ट्रांजैक्शंस अपने थ्रू करवा रहा है, मतलब. ठीक है. फिर थर्ड पार्टी कैसे है? सर थर्ड पार्टी इन द सेंस कि हम लोग जो कस्टमर है और जिससे पैसे कट रहे हैं और जिसके कट रहे हैं, जिसको जाने हैं, तो वो सारा उसके बीच में हम एक अलग एंटिटी यूज कर रहे हैं जो पेटीएम होती है. ओके. अच्छा, एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं. अगर इफ यू विल नॉट एग्री देन वी कैन करेक्ट दैट डेफिनेशन आल्सो. मर्चेंट एंड थर्ड पार्टी. मर्चेंट इज काइंड ऑफ द वी कैन से द एंटिटी दैट डायरेक्टली provide the service to the customer. Okay, ऐसा ही है, ठीक है? हाँ या ना, वही तो बोलो. Yes, sir. ठीक है. थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मीन्स when we cannot make the communication directly to the merchant but via third party or the intermediate entity, then the third party role will play. ओके. तो जैसे अभी आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी या कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया. सपोज आपने आपके पोस्ट पेड फोन का, मोबाइल फोन का बिल सबमिट किया, ठीक है? सपोज वो है वोडाफोन का आपका सिम है, फाइन. तो यू आर यूजिंग पेटीएम एज अ थर्ड पार्टी
for making the transaction, because that Paytm is providing the different services for bill payment, electricity bill payment, for shopping, and lots of things. Okay, now how the merchant is, Paytm merchant kab banega? In which case you will say that Paytm is also a merchant? When you will directly deal with the Paytm? When? जब हम पेटीएम मॉल से कुछ खरीदते हैं, नहीं, स्टिल वो पेटीएम मॉल तो एक टैग, एक समझ लीजिए वो तो स्टोरेज है, बट प्रोडक्ट्स तो उसमें सभी अलग अलग ही रहते हैं ना। सर जब वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन मतलब प्रोवाइड करवाएगा। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल पेटीएम वॉलेट, ठीक है, इसको भी आप एक सेंस में तो फिर भी डिनाई कर सकते हैं कि क्योंकि आपका अकाउंट सपोज एसबीआई का है, ठीक है, आप ट्रांजैक्शन उसके थ्रू कर रहे हैं, बट इन दैट केस क्या होगा, एसबीआई तो थर्ड पार्टी बन जाएगा, ठीक है, ओके, बिकॉज यू हैव सेट द login password, login ID for Paytm itself, and once you will log in with that credentials, only then you can access your account or related to the Paytm. And for having the amount in your Paytm wallet, you will use the SBI as a third party. Now if it is safe, because if there will be a third party involvement in that Paytm wallet, the other than the Paytm, then there will be chances that chances of means mishappening with your money. But what you say, what you do, that you are having a Paytm wallet in which you are having the money जो आपने आपके particular bank account से लिया, and in that case now Paytm will take care all the things. ऐसा ही है? Okay. Yes sir. Okay, now so in that case you can say that Paytm kind of the thing will play the role of merchant. Okay, now we will say that how the customer is there. क्या Paytm कस्टमर की तरह हम किसी भी केस में कंसीडर कर सकते हैं क्या? देखो, there is a hierarchy. When we will see from our end, means we are the consumers. Okay, so from our end we cannot say that Paytm is the customer. No, because Paytm is having all the things, all the stuffs, and we directly deal with the Paytm or directly or indirectly. तो हमारी नजर में तो वो कभी नहीं बनेगा. But now think, suppose आपने एक वॉच ऑर्डर किया, ठीक है, लेट्स से वॉच, ठीक है, टाइटन का, फाइन. When we order a watch in Paytm shopping store, whatever the store, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो सपोज टाइटन का आपने वॉच ऑर्डर किया है, बट वो वॉच अगर डिस्प्ले में आ रहा है Paytm के ना, तो कहीं ना कहीं से Paytm ने अप्रोच किया होगा इस कंपनी को, तभी तो वो प्रोडक्ट शो हो रहा है, या कुछ तो डील हुआ होगा, है ना? Yes sir. ठीक है. So when in previous that deal was happened, in that case for means for particular time moment, Paytm were the customer at that moment, ठीक है. बट हमारे डायरेक्ट हमारी तरफ से वो कंज्यूमर कस्टमर नहीं लगेगा, because we will consider Paytm as a merchant or the third party, and we will consider ourselves as the consumer. Okay, so these are the basic difference of the third party, merchant, and customers. So, and everywhere now you can see, everywhere there are lots of entities, lots of things are available, lots of problems are there, means lots of conditions are involved for making a one transaction. So there must be kind of the security services in each and every step, otherwise money because money is involved
in that transaction. Okay, now the issuer. Now this is a financial, the third one we can consider the issuer. Okay, now this is a financial institution such as a bank that provides the card holder with the payment card. Okay, so अगर आपके पास HDFC का है या SBI का है, so now issuer will come into the picture. अभी यहाँ पर हमने कार्ड होल्डर के पास कार्ड था, बट वो कार्ड इशू किया गया होगा. अच्छा, why it is important? The important thing is that generated, अगर वो SBI, HDFC और किसी renowned बैंक से इशू है, only then you will say, or anyone will have the faith that that card is a valid card. Otherwise, if it is not directly related to SBI, HDFC, Axis Bank or other bank, or the other the renowned or the authentic bank, then that card will be fake card. Okay, so this issuer will come into the picture, and it is very important thing. After this, we can say the fourth is the acquirer. Okay, now आपके हिसाब से ये acquirer होगा क्या? What is the acquirer? नहीं? अच्छा चलो इसको ऐसे समझते हैं. I am dictating one line regarding the acquirer. So acquirer is this is a financial institution that establishes an account with a merchant and processes payment card authorizations and payments. Merchants will usually accept more than one credit card brand, but do not want to deal with multiple bank card association or with multiple individual issuers. So again, this is इसको आप ऐसे बोल सकते हो, this is financial third party. ठीक है, that is having the predefined and complete certification rules और the guaranteed rules, जिसको दोनों को मानना पड़ेगा, कस्टमर को भी और मर्चेंट को. And after this we can say the payment gateways there. So payment gateway, now here in this step SAT will work or SAT functions with full base. ठीक है, whatever the rules are there, everything that SAT is apply is SAT applies all the rules and all the things here in payment gateway for making the transaction secure. And at the end we are considering this certificate authority, but ये predefined set of certification rules होते हैं जो पहले ही decide किए जाते हैं, और ये and every rule is written here, that how the payment gateway will become the crucial thing, and at which step of the transaction. Similarly, issuer, card holder, everyone is having its role according to the predefined set of rules or the certification. क्योंकि एक बार आप certification के साथ चलते हैं, तो after the transaction no one can deny that such kind of the transaction is not done. means ना तो merchant बोल सकता है और ना ही card holder कह सकता है once the transaction is completed. So these are the basic steps of the SAT. Then we can move. Okay. So SAT transaction. So when we talk about the SAT transaction, so there are basically 10 SAT transactions. So
इन सीरीज, तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं, दिस इज फर्स्ट वन. एंड व्हाट इज फर्स्ट? नाउ वेरी फर्स्ट इज कस्टमर ओपन्स अकाउंट. तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका अकाउंट ओपन है. देन कस्टमर रिसीव्स अ सर्टिफिकेट. आप इसको कुछ इस तरीके से कंसीडर करके चलिए कि जब आप क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, so after some times you will have kind of the envelope, okay, that this is your credit card and first 4 pin is this. Now you can change within the 2 or 3 months. उसके बाद वो पिन जो है दोबारा से जनरेट होगा and then we can change the pin, something like this. आपको कस्टमर केयर सर्विसेज के बारे में बताया जाता है. तो these are the very basic rules, but still we receive before having the credit card, okay. So उसी तरीके से जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो सभी by default वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं. एंड कस्टमर मींस कस्टमर अकाउंट, आप हम तो अपना अकाउंट ऑनलाइन आप चेक करेंगे, सो देयर आर लॉट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑटोमेटिकली वो उसमें आ जाती है. नाउ मर्चेंट्स हैव देयर ओन सर्टिफिकेट. दिस मर्चेंट के पास भी सर्टिफिकेट होता है. फॉर एग्जांपल एसबीआई क्रेडिट कार्ड में हो सकता है उन्होंने दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर पुटिंग सम काइंड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी लाइक कि आपने 10 days, within 10 days of your बिल पेमेंट आपने अगर नहीं पे किया तब तक कुछ चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा. हो सकता है कोई और बैंक आपको बोले कि नहीं within 5 days ही करना है. हो सकता है कोई बैंक आपको बोलता है कि नहीं सेम डे में करना है, अदरवाइज देयर विल बी एक्स्ट्रा चार्जेस. So something like this. तो merchant is also having their own certification. वो ऐसे plan कर सकते हैं अपने according. Then after having the card and all the prerequisites, then customer place an order. Merchant verify. आप जब भी आप online order करते हैं तो उसमें before final submission वो there will be a message that first you have to check your order, recheck your order, and you have to recheck your transaction details also, or all the other things. So this is kind of the verification. Merchant verify करता है और आपको भी. And after that, this 5th step, this one is order and payment are sent. Okay, now merchant request payment authorization. There will be a kind of the OTP system. Once you will put the OTP, only then your process will considered as a complete process, and merchant confirms the order. Once you will put everything, then there will be a confirmation, and after having the confirmation of the order from the merchant side, then there will be there will be facilities that merchant can provide to us, like आप ट्रैक कर सकते हैं आपका ऑर्डर कितने दिन में आएगा, व्हाट इज योर ऑर्डर नंबर, समथिंग लाइक दिस. एंड ये जो लिखा हुआ है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. एंड देन मर्चेंट रिक्वेस्ट पेमेंट. ओके, सो एट द लास्ट स्टेप वो पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर देता है और फाइनली आपका जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. सो दिस इज kind of the a SAT transaction. Okay, so basically ये जो diagram था, this is the important one for understanding, for defining the SAT system, secure electronic transaction. Now we have to start email security. So this is again important topic regarding the email security. So there will be some kind of the block diagrams. So we will discuss the email security process with block diagrams, and here is one word is attached that is called PGP. सुना है word PGP word सुना है किसी ने? Anyone? Pretty good privacy service. So we will discuss this email security for pretty good privacy service.